Hello viewers, samningan saise NLTV Digital News. Moi ase chumongla phom Waqf Amendment Act opor khobor ekta ina janai dibo. Alag jaga de Waqf Amendment khilaf protest kan loi thaka mohan dikhibo pari ase. Itu opor aji Supreme Court ba takanla verdict dise. Itu la opor sai sab. Supreme Court ba Thursday din Central ke 7 din grant kurise Waqf Amendment Act 2025 la validity please ke respond kurubole. Apex Court ba please hunigina kuise next hearing tak Central Waqf Council Board te non-Muslim khan ke appointment kurubole naparibo. Supreme Court ba kuise ki iman bishi please ke deal kurubole possible nai. Itu karne khali 5 ta hunibo kuise. Petitioners can ba Central laga reply de 5 din post nibide rejoinder file kurubole paribo kuise. Center bra Supreme Court ke issue kurise ki taikan bra ahibole laga hearing nohadak Waqf by date aro Waqf by user to de-notify nukuribo koikna. Supreme Court bra May 5 to junikina ase Waqf Amendment Act laga validity khilaf please hunibole nimide. Supreme Court bra festa nolo ageri alag jaga khanti protest kurigina ahishe. Janda khan bra Waqf Amendment Act opor andolan kura laga maksad to Muslim khala rights aro property hari jabo karne ase. Existing Waqf Act 1995 ke arobe amend kurubole koshish kura opor opposition khan bra sarkar ke criticize kurise. Andolan kura laga karan khando Waqf boards laga chunav hatai dibole faisla loa Waqf board te non-Muslim khan ke include kuribole faisla loa karne Waqf properties laga protection hatai dibole faisla loa opor sarkar laga control increase hoigina minority rights hatai dia karne ase. Act opor opposition parties Congress, Trinamool Congress, CPI aro alag party khan bra oppose kurise. All India Muslim Personal Law Board, Jamiyat Ulama-e-Hind logot alag organization bra bi act opor oppose kurise. Nagaland, Tripura, West Bengal, Jharkhand aro alag state tibi Waqf Amendment Act opor oppose kurise. Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Assam, Rajasthan, Maharashtra, Haryana aro Uttarakhand bra Waqf Amendment Act opor support kuriase. Waqf by user is, in my understanding, covered to a great extent, and those Waqf by users which are either registered, notified or declared, or even if it is used, they are covered by this order. So I think it will protect us. So how satisfied are you, or you think something is missing? I think something good has happened and something more are needed, which we feel that on the next date of hearing we'll press for them. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. वक्फ में बहुत साफ है, चंद लोगों ने 2 लाख करोड़ रुपए की वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। कुछ नेताओं ने मिलकर कब्रिस्तान की जमीनें भी बेच दी मॉल बनाने के लिए, कुछ ने 1200 रुपए में 5 स्टार होटल बनाने की अनुमति दे दी, कुछ कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है। ये लूट की खुली छूट जो वक्फ के नाम से थी, अब उसको ताला लगाने का काम आ गया था। ना किसी मस्जिद पर, ना किसी मदरसे पे, ना किसी कब्रिस्तान पर कोई कार्रवाई होगी, ये मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है। लेकिन वक्फ की जमीनों का लाभ मुस्लिम महिलाओं को, विधवाओं को, बच्चियों को, बच्चों को शिक्षा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और उनकी मदद के रूप में मिले, ये हमारा संकल्प है, हम करके दिखाएंगे। Notified Waqf
or registered waqf or waqf by user will not be disturbed. So status quo to be maintained. Second interim relief which has been given is that no appointment to the state waqf boards or central waqf council will be done. So these two provisions have been seized, which to our understanding could have been misused to the maximum by the government. Now the Supreme Court has given a week's time to the union government to file the reply, as well as to the state waqf boards, and 5 days to us to file a rejoinder. Supreme Court has also said that you have to appoint 5 councils to argue the matter, and 5 petitions have to be chosen out of this lot of 70-80 petitions, which will be treated as the main petitions or the petitions which will be considered. The other petitions will be considered as applications or whatever the Supreme Court decide. So a nodal council has also been appointed. Mr. Maqbool has been appointed nodal council from the petitioner side. From respondent side, I think Mr. Jan has been appointed. So 5 councils which we were just contemplating who will lead us in the matter is which we have just discussed: Mr. Sibbal, Dr. Singhvi, Dr. Rajiv Dhawan, Mr. Huzaifa Ahmadi, and Mr. Salman Khurshid. So till this time, there is a consensus on these 5 council. Rest, I think it will be very clear, but most probably these 5 will argue. लोकतंत्र में उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि आज हमें उम्मीद है सबसे ज़्यादा माननीय सुप्रीम कोर्ट पर, जहां देश के महत्वपूर्ण लोग, जहां देश के सबसे महत्वपूर्ण संगठन मुस्लिम समाज के और कई पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर गई हैं, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह का ऑब्जर्वेशन और जिस तरह के कोर्ट में बातचीत हो रही है और जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, हमें उम्मीद है कि मुस्लिम और खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए जो हमारे संविधान में व्यवस्था है कि उनका अधिकार है, अपनी स्वतंत्रता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट जरूर विचार करेगा। और जो टिप्पणियां हो रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मनमानी करती है, भारतीय जनता पार्टी मन विधान से देश को चलाना चाहती है, संविधान से नहीं चलाना चाहती, मन विधान से चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी में संवाद का कोई रास्ता ही नहीं खोलते हैं ये लोग। जब कई दल और महत्वपूर्ण संगठन ये सुझाव दे रहे थे कि इस तरह का फैसला, इस तरह का कानून नहीं आना चाहिए वक्फ का, लेकिन सरकार लेकर के आई है। अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर है। जिस उम्मीद के साथ में हम लोगों ने रिट पिटिशन किया था, तो अब हमें उम्मीद है कि कुछ इंसाफ की हमें वो नज़र आ रही है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्टे किया है और अभी 1 हफ्ते का समय दिया है, आने वाली भी जो तारीख होगी उसमें हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने अपने पॉइंट अपने उसके अंदर रखे हैं कि हम प्रयास करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर भी सुनवाई करे और आगे को हमें और ज़्यादा रिलीफ दे, जिससे कि हमें उसमें संतुष्टि मिले। इधर खबर लइना डिजिटल न्यूज साथे खत्म कराय साउथ इंडियन न्यूज अपडेट्स पाइ থাকিলে চাই থাকিবি নাগালেণ্ড টিভি। Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.